क्लियर है? ये मैं इधर आ जाता हूँ। स्लाइड शो होगी सिर्फ। जी बेटा कैसे कब when to start? नहीं सर, अभी 1 मिनट दिया था प्रिपरेशन के लिए, तो अभी आप ये 51 सेकंड। 51 ओके ठीक है। करूँगी कैसे इसको पूरा करना है, इसको फुल कैसे, ये देखो हमने हाँ चल क्यों नहीं हाँ? ठीक हो गया ना ये Is it clear? Slides are clear. Okay, मैं इसको जरा ठीक हो गया, ठीक हो गया ये। आज ना ये मसला हल नहीं होगा, ये 4-5 लेक्चर होंगे तो बात चलेगी आगे। आज मैं डायरेक्ट उस पे नहीं जा सकता जो आपने बताया ना। ये देखिए ना इतना कुछ मेरे पास है, ये सालों की साइंस है, ये एक दिन में नहीं हो सकती। नजर आ रहा है ना आपको? यस। हाँ तो ये तो बहुत स्टॉप शेयरिंग आगे, ये नीचे क्यों आ रहा है? ये एक दिन की बात नहीं है, ये तो ये तो रोग हैं माहौसाल के, ये तो गर्दिशें हैं, सफर नहीं है। ठीक है, आपका क्या टाइम हुआ है हीरा? सर मेरा सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे हैं। कितना टाइम इस वक्त आपके इधर? टाइम 5 PM। आप पीछे हो हमसे जी 3 घंटे। जी ये भी आज बताना है क्यों पीछे हैं और क्यों आगे हैं। सर हमें स्टार्ट कर देना चाहिए अब। ओके, कोई आए हैं बच्चे कि नहीं? सर हम पिछले 5 मिनट से लाइव हैं। नहीं लाइव तो है, बट व्हाट अबाउट वो आपको, कैन यू सी द नंबर्स हाउ मेनी जॉइन? have the students joined? Should I start? ये लव करें जी। जी स्टार्ट करें। Okay. Hello everyone. I am Syeda Hira Benish, and currently I am a student of Erasmus Mundus scholarship in Europe. And my first year of masters is in Hungary, where I am studying agri-food near Danube region. And my second year will be in Serbia or Slovakia. And today I'm lucky enough and I'm thankful to the team that they gave me a chance to host this webinar on the topic of crop calendar under climate change. And I'm very happy to tell you that I have done my bachelor's from University of Agriculture Faisalabad, and I was lucky enough to be a student of Professor Dr. Syed Aftab Wajid, who is our speaker today. So if I tell a little bit about him, I can't say a lot because he is literally a live example of science, but I will be telling that he's a crop modeler and he's a climate change specialist, having a very good understanding of relationships between climate change and agricultural systems. And he has also been using mathematical and statistical tools to draw models that can be used to improve the crop growth, crop yield, for yield forecasting, and
and how on the mitigation of climate change impacts. And he has been collaborating with international scientists and organizations, and he is also a part of so many projects, upon which from which I can mention one project which is named as AGMIP, Agricultural Intercomparison and Improvement Project. So today we are very thankful to the sir that he is going to talk on this topic of crop calendar under climate change. So yes, sir. Thank you so much for a nice introduction, Hira. Uh, Also, very much thankful to the team. Many times we change the date and time also because of busy schedule, sometime from my side or from other side. Okay, I'm going to present my talk on crop calendar under changing climate. Very beautiful title, I think. We should say that if you talk about the Pakistani climate, almost 11 महीने शदीद गर्मी और 1 महीना गर्मी. तो मौसम आपके जो चार थे उनमें से दो स्किप कर गए हैं. ऑटम खत्म हो गया है, आपका स्प्रिंग खत्म हो गया है, आपकी सर्दियां श्रिंक हो गई हैं, आपकी गर्मियां बढ़ गई हैं, और आपकी बहुत से जो है कैटास्ट्रॉफी, यू मे से दैट आई शुड यूज दिस वर्ड. ये क्लाइमेट जो है अब आपकी कैटास्ट्रॉफी बन चुकी है, और ये फ्यूचर में क्या हालात होंगे. आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस वन. So outline of my presentation, we will discuss about the climate models and type of climate models, how model work, then old scenarios, IPCC used in 80s, A1, A2 scenarios, then RCPs in 2010, the CMIP 5 RCPs were used. It means representative concentration pathways 2.5, 4.5, 6.5, and 8. These are given by the NASA actually. Then new RCPs has been replaced with CMIP 6 SSPs. So quite good to downscale future data of any region. Then crop modeling we will discuss, and phase and fate are very much important. We will also throw some light on these two parameters. Climate change, and its drivers, long-term change in temperature and weather pattern. Once, if I talk about 1800, so if you go back from 1800, 1 million years back, so there was no increase in temperature of this earth. Mean temperature that remained 14 degrees Celsius, and CO2 concentration that remained within limit of 280 parts per million, between 260 to 280 parts per million. But after that, फिर skyrocketing increase in, in temperature and CO2. Just understand, in the surface of sun, every second hydrogen 364 million tons is converting into 360 million tons of helium. So there is difference of 4 million tons. So sun is sending in the form of packets or energy from sun passing through space, entering into our atmosphere, और आपकी ट्रोपोस्फियर तक पहुंचती है, जो 0 से 8 किलोमीटर आपके सर से ऊंची है, और फिर 8 से 18 स्ट्रेटोस्फियर 2. तो वेदर के फिनोमिना इन्हीं के अंदर होते हैं. तो 85% ट्रोपोस्फियर में होता है, जो 8 किलोमीटर ऊंची है. तो हमारे सर से ऊंची जो 32 किलोमीटर जो शील्ड है ओजोन की, वहां से जब ये गुजर के आती है तो सारी ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं. All objects are receiving energy through day, but same amount of energy will be re-radiated back into space, passing through our atmosphere, same amount which they have been absorbing through day.
सारी बिल्डिंग, सारी रोड, सारे ओशन, सारी हर चीज एक्सेप्ट लेस देन 1% इज कैप्चर्ड बाय द ट्रीज जिन्होंने खुराक के लिए इस्तेमाल करनी है। अब हमने डिफॉरेस्टेशन इतनी कर दी और ट्रीज की जो है एफॉरेस्टेशन नहीं की और फॉसल फ्यूल बर्निंग और एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस इतनी कर दी कि उससे जो शॉर्ट वेव रेडिएशन अल्लाह ने भेजी थी वो सारी की सारी अब जमीन से टकरा के लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं और ओजोन लेयर से शॉर्ट वेव तो वापस चली गई लेकिन लॉन्ग वेव वापस नहीं जाती। तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जीएचजीस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वो इतनी क्यूमुलेट हो रही हैं पूरी दुनिया में 32 किलोमीटर ऊंची आपकी ओजोन की लेयर के अंदर कि वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लेती है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ दिस अर्थ और ग्लोब, तो दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। दोनों में थोड़ा सा माइनर सा फर्क है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मीन वो जो ट्रैप हो जाती हैं ओजोन लेयर के अंदर। तो तीन इसके इंडिकेटर हैं, टेम्परेचर इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड एलिवेशन और इरेटिक रेनफॉल। ये मैंने बता दिए हैं। ये हमारी अर्थ का अगर आप कहें तो इसको डिवाइड करें तो ये चपटी है और ये सेंट्रल लाइन जो है वो दैट इज कॉल्ड वो ग्रीनविच मीन टाइम और इक्वेटर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स और आपकी इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ 90 डिग्रीज है और साउथ पोल की तरफ 90 डिग्रीज है। तो 180 डिग्री ये बन गया और आपकी लॉन्गिट्यूड ये लैटिट्यूड है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो Excuse me, लाइनें आ रही sir. I think we are seeing only your first slide. हैं नॉट अदर व्हाई I don't know. It's the title slide. Yeah, now I can see. Now I can see. यू कैन सी दैट। Yeah, thank you. ओके, ये होगी जी आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, नॉर्थ टू साउथ आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ। तो हमारा टाइम जोन का भी मैं हिरा से पूछ रहा था कि आपके क्या टाइम हुआ है, तो उसने बताया कि हमारे टाइम में इस वक्त 3 घंटे या 4 घंटे पाकिस्तान से पीछे है। तो अभी हमारे बच्चे की भी कॉल आ जा रही है यूएसए से, वो 9 घंटे हमसे पीछे हैं। और ये अगर ये 180 और 180 लॉन्गिट्यूड जो लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, तो ये 360 बनता है। तो इसको 24 पे डिवाइड करें, दिन में 24 घंटे होते हैं तो 15 डिग्री बनता है। तो हर आपके जहां आप बैठे हैं उससे राइट साइड की तरफ मूव करें, हर 15 डिग्री के बाद 1 घंटा टाइम आगे चला जाएगा। ये ईस्ट साइड पे और वेस्ट साइड पे हर 1 घंटा टाइम पीछे चला जाएगा। कितने डिग्री आपसे 15×6 90 हो गया तो आपकी फैसलाबाद से, तो इसका मतलब 6 घंटे वो पीछे होगा लेफ्ट साइड पे अगर होगा इक्वेटर की। तो इस पे फिर दोबारा कभी बात होगी। तो हम इसको एक में फिनिश नहीं कर सकते, हम इसके 2-3 वेबिनार रखेंगे ताकि आपके क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग स्कीम सारी हो, क्लाइमेट रेजिलियंस हो और तब आपको पता चले। अभी आपको इसके अवेयरनेस होनी चाहिए। तो क्लाइमेट चेंज ट्रेंड जो थे 48 ईयर में 60 से लेके 2007 तक वो क्या हुए, तो पूरी सदी में आपका टेम्परेचर 0.6 डिग्री इंक्रीज हुआ और उसके बाद 1960 के बाद तो पर लगे 1.2 डिग्री 2007 तक इंक्रीज हुआ और फिर 2040 से 70 तक हमने देखा कि 3 डिग्री बढ़ जाएगा और इस सदी के अंत तक 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर फैसलाबाद का बढ़ जाएगा। और आपके ड्राउट पीरियड और फ्लड जो आए 2010, 14, 22 और 23 को आए। ये ग्रीन हाउस गैस जो है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, चूँकि एज ए फॉसल फ्यूल बर्निंग और उसको इंसान छोड़ रहे हैं, जानवर छोड़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन में, तो ये इसको हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं। आल्दो मीथेन ज़्यादा खतरनाक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा खतरनाक है, नाइट्रस ऑक्साइड उससे भी ज़्यादा, लेकिन हम स्टैंडर्ड जो है वो 76
25% जो है वो ग्रीन हाउस गैस CO2 को बना लेते हैं। तो हम बेस लाइन के साथ रन करते हैं तो आप देखेंगे कि 1900 ये नीचे जो है वो मीन टेम्परेचर अर्थ का वो कभी भी 14 डिग्री से ऊपर नहीं गया, ब्लू लाइन। तो आपकी कुछ वो रेड में जाना शुरू हो गया, ब्लू कम हो गई, और अब तो माशाल्लाह सारे हैं ही रेड में। तो इस वक्त अर्थ का कोई मुझे बताएगा मीन टेम्परेचर 14 डिग्री से जो 1800 तक 1780 तक 14 डिग्री था अर्थ का मीन टेम्परेचर, वो 1 लाख साल 10 लाख साल पीछे इस वक्त बढ़ के 14 ये तकरीबन 200-250 सालों में कितना बढ़ चुका है अंदाजन 3.72 डिग्री सेल्सियस। तो हम बेसलाइन के साथ इसलिए 1980 से लेके 2010 तक का IPCC की इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो हम लेते हैं उसके साथ हम बनाते हैं बेसलाइन के साथ, इसलिए कि 80 के बाद कोई भी ब्लू लाइन में 14 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं नजर आ रहा, आपको सारे रेड में चले गए, टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो 2020 तक ये 1.2 डिग्री मीन टेम्परेचर बढ़ा था। अर्थ का टेम्परेचर जो अब तक वो 1.12 डिग्री सेंटीग्रेड ये 1850 से तक हुआ, उसके बाद रेट जो है वो वेरी हाई 0.2 पर डेकेड हर 10 साल के बाद, लेकिन इस वक्त 0.96 हो गया पर डेकेड। ग्लोबली वार्मेस्ट ईयर जो थे 2023 थे, और फिर 1900 से लेकर 2000 तक अर्थ का मीन टेम्परेचर 13 डिग्री से वो बढ़ के तो 1.18 इसमें इंक्रीज होगी 13.9 से, और 10 वार्मेस्ट जो ईयर भी आपके 10, 14 उसके बाद 22 तक रहे, और कंटिन्यूसली 23, 24 उससे भी ज्यादा वार्मेस्ट। ये आप में सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 18% टुवर्ड्स ग्रीन हाउस गैसेस। ये आपके सारे फार ईस्ट और ईस्टर्न कंट्रीज वियतनाम, लाओस, कोरिया, जापान वगैरह ये सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइस ग्रोवर हैं बहुत बड़े, तो वो भी एक वन ऑफ द रीजन। और डायरेक्ट फर्मेंटेशन जो होती है उसके स्टमक में उसके लाइफ स्टॉक के, तो वो भी 52% कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की वो एनर्जी सेक्टर है। आपकी सारी पाकिस्तान में जो क्लीन एंड क्लीन एनर्जी कहा था, हमने भी प्लेटें लगवाई, लेकिन उन्होंने वो ज़ीरो कर दी, और उन्होंने कहा 70 रुपये हमसे गंदा तेल से जो हम पैदा कर रहे हैं वो लें, क्योंकि सरकार को बड़ा फायदा है इसमें। ओके, वार्मिंग ओवर पास्ट 30 ईयर्स, तो ये अगर ये चेंज इन टेम्परेचर और ये इट्स ऑफिशियल, ये देखिए जी आपको नीचे नजर आ रहा होगा सर स्लाइड अभी वही है जो आपने अर्थ वाली दिखाई थी ना। अच्छा, ये क्या वजह है? पता नहीं, अब जब मैं कहती हूँ तो तब चेंज होती है, आई डोंट नो। फिर आप कह दिया करें अब हुई, अब हो गई है, हाँ जी। ओके सॉरी, अब नेक्स्ट होगी। अभी इट्स ऑफिशियल वाली है। नहीं ये नहीं, ये ये ऑफिशियल वाली ये क्यों नहीं होगी? अभी ये ब्लू वाली आई है, ब्लू वाली आई है। अच्छा, जी। ये दोबारा करना पड़ता हर दफा। ये देखिए जी आपके वार्म ईयर्स वो बढ़ रही हैं तेजी से, 40, 45, 48, ये आपका जितना ब्राउन कलर होगा, येलो कलर होगा, वो आपके एरिया ज्यादा पूरी दुनिया। अच्छा, वो आप मुझे कोई बताएगा कि ये ऊपर क्यों ज्यादा जा रहा है? नॉर्थ पोल वो तो ठंडे हैं सारे, उधर क्यों ब्राउन हो रहा है ज्यादा? व्हाई नॉट इन सेंटर और उसके करीब करीब? मे बी बिकॉज सेंटर इज अवे फ्रॉम सन। अगर और इक्वेटर के पास 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़े तो ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 12 गुना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है।
तो दिस इज बिकॉज ऑफ ये आर्कटिक क्वेश्चन और आपके सारे उधर से बर्फ पिघल रही है। ये नेक्स्ट आ गया, प्रोजेक्टेड एनुअल ग्लोबल कार्बन इमिशन। नहीं, अब आ गया। ये क्या चक्कर है? अब प्रोजेक्टेड एनुअल ग्लोबल कार्बन इमिशंस, कार्बन इमिशन अगर देख लें तो वो 1900 के बाद वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और ये हम CMIP 5 के तहत वो निकालते हैं 2.6 RCPs पे। तो हायर सिनेरियो पे वो बहुत उन्होंने कहा जी कि ये 0 से 30 गीगाटन इमिशन हो रही है एनुअली कार्बन डाइऑक्साइड की, और इधर उसके नतीजे पे तौर पे आपका 1900 के बाद कंटिन्यूसली राइजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, और आपका टेम्परेचर तकरीबन 6 से 8 तक चांसेस हैं इस सदी के अंत तक बढ़ जाएगा, ऑन एन एवरेज 4.2 बढ़ेगा। ये नई नजर आई सूरज अभी तक? अब यस फिर इसको छोटा ही रहने दें फिर, हो सकता है यही इशू हो। अब नेक्स्ट आ रहा है। हाँ जी, ओके चले, फिर लो जी, ये फिर इसको हम चलाते हैं। 3 degrees. It can be the difference between snow and sleet, wearing a jacket or not. In your day-to-day life, it may not seem significant, but 3 degrees of global warming would be catastrophic. Heat waves, droughts, extreme precipitation, even fire. 3 degrees of warming is really disastrous. The scary thing is, the world is well on its way there. Since the Industrial Revolution, the Earth has warmed between 1.1 and 1.3 degrees Celsius. This is a problem that babies you pass in the street will have to live with. Children born today are up to 7 times more likely to face extreme weather than their grandparents. If global temperatures do rise by 3 degrees, what would their world look like? Rising sea levels, desertification. Hollywood has always enjoyed imagining the end of the world. While blockbusters like this are clearly fiction, this film will show the scenario we all face, unless more drastic measures are taken to stop burning fossil fuels. In some parts of the world, the effects of inaction are already clear. The slums of Bangladesh's capital are filling up with climate migrants. Minara comes from Bola district, an area in southern Bangladesh. There, like many other parts of the country, rivers swollen by heavier rain and melting Himalayan glaciers are washing over. ओके, ये अगर आप देखें तो आपके पुराने सिनेरियोज जो हैं 80s के उन्होंने बनाए थे, A1 और A2 सिनेरियोज और B1 और B2 सिनेरियोज, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आपकी IPCC की पहली 4 जो रिपोर्ट्स हैं अगर वो ऑन द बेसिस ऑफ A1 A2 सिनेरियोज हैं, इसमें सिर्फ वो उसको टेक इनटू कंसिडरेशन टेम्परेचर को, ठीक है, और रेनफॉल। लेकिन अब जो प्रेजेंट जो आए हैं वो उसमें हम जो असल मेन काज है, मेन कल्प्रिट है, वो है GHG, ग्रीन हाउस गैसेस। टेम्परेचर इज नॉट सोनली राइजिंग, ग्रीन हाउस गैसेस आर राइजिंग, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टेम्परेचर इज राइजिंग, ठीक है जी। तो ये कंटिन्यूसली 1900 के बाद राइजिंग ट्रेंड आप देख रहेंगे। सारे सिनेरियो ये बताते हैं, A1 A2 ये बताते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा 6 डिग्री तक, और दूसरे बता रहे हैं तकरीबन 2.5 से 3 तक बढ़ेगा। अब चल रही है ना साथ साथ? यस
ओके, तो ये अगेन वही 1860 के बाद कंटिन्यूसली राइजिंग ट्रेंड देख रहे हैं आप। टेम्परेचर का मीन जो है वो 2000 में 14.7 हो गया था, इस वक्त 17.92 हो गया है। 2 महीने पहले नासा की इस बार आपने नोट किया होगा बच्चों ने। बच्चे प्लीज अगर बैठे हैं तो वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो मुझे बताएं कि नॉर्मल सोइंग जो वीट की थी वो तकरीबन 20 से 25 दिन पहले सिट्टा निकल आया था। वो उसकी रीजन कोई बता सकता है? मुझे लगता है कि जो टेम्परेचर स्विच होता है, 1.5 डिग्री टेम्परेचर, 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर पिछले 30 सालों से फरवरी का ज्यादा आया था 2025 में। उससे ये हुआ कि नॉर्मल सोइंग जो थी उसका जो स्पाइक वर्जेंस बहुत जल्दी हो गई जी। ये हो गया जी आपकी अब कार्बन कंसंट्रेशन। अब वो मुझे नहीं नजर आ रहे ऊपर क्या है। ओके, टेम्परेचर चेंज एंड CO2 कंसंट्रेशन, ये अगर आपको नजर आ रही है स्लाइड। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, यस। ये देखिए जी, कंटिन्यूसली CO2 rising, as a result of that temperature is rising. Temperature is not solely rising but as a result of greenhouse gases. ये देखिए जी राइट पे ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टेम्परेचर बढ़ रहा है। हर CO2 की कंसंट्रेशन डबल होने से 2.3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखिए ऐसे आपने पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी है ऐसी। लो जी 790 ppm हो जाएगी इस सदी के एंड पर, जो उन्होंने 2100 में कहा था कि 525 होगी ppm, लेकिन अब नए मॉडल जो हमने यूज किए हैं वो बता रहे हैं कि वो 1000 से एक्सीड कर देगी, 1225 ppm हो जाएगी CO2 की कंसंट्रेशन। अर्थ विल नॉट बी वर्थ लिविंग आफ्टर। आप देखेंगे हम तो पक्के फल आज के कल के। तो अब सबसे पहले आपने करना क्या है जी, क्लाइमेट मॉडल का यूज करना है। वो नासा के 32 मॉडल है। तो पहले उनको GCM कहते थे, अब उनके नाम वक्त के साथ साथ चेंज करते रहे हैं। ये फिजिसिस्ट ने बनाए थे, फिजिक्स वालों ने, और मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस यूज करते हैं पिछला ऑब्जर्व डेटा लेके। तो हमारे पास तो है ही कोई नहीं अल्लाह की मेहरबानी से। और फैसलाबाद का डेटा मेरा ख्याल है कोई 1980 से अवेलेबल है, बाकी डिस्ट्रिक्ट का मिलता नहीं है। बहरहाल मैंने 36 डिस्ट्रिक्ट का 2017 में किया था डेटा डाउन स्केल फ्यूचर का, और राइस वीट और क्रॉप कॉटन वीट क्रॉपिंग जो सिस्टम है ना उनके अंदर, और फार्मर लेवल की पे कितनी यील्ड आ रही है उस पे जो लेटेस्ट काम किया था USA वालों के साथ मिलके, एग्मिप जिसको बोला बच्ची ने, AGMIP एग्रीकल्चरल मॉडल इंटर कंपैरिजन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो हम इक्वेशन यूज करते हैं, मॉडल मीन सेट ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये GCM जो है वो इन सिस्टम के कोई ऐसी चीज मिस नहीं है। एरोसॉल एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, फिर सी आइस है, फिर ओशन है, फिर डायनामिक है ओशन के, फिर ओशन की कार्बन साइकिल है वो ज़रा फिक्स करती है उधर कार्बन डाइऑक्साइड को, और डायनामिक वेजिटेशन है और लैंड सरफेस है। ये सारी जो है एक सिस्टम है जो जो मतलब जमीन के ऊपर हो रहा है, ऊपर से एनर्जी आ रही है, तो उनकी सारियों को हम वी टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज पैरामीटर्स, और फिर हम डेटा डाउन स्केल करते हैं फ्यूचर का। तो IPCC ने इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज उन्होंने 1978 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो इस सदी को 3 में कैटेगराइज किया। कोई बता सकता है? 2010 से लेके 39 तक अर्ली सेंचुरी, 40 से लेके 69 तक मिड सेंचुरी, और 70 से लेके 29 तक ये एंड सेंचुरी। तो हमने अर्ली सेंचुरी, मिड और लेट के लिए क्वार्टर मीट राइस,
और 3-4 और क्रॉप्स का मैंने 2017 में किया था। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट काफ़ी इंटरनेशनल पब्लिकेशन हुई। हमारी पूरी एक टीम थी, जज साहब उसके हेड थे, और वो आजकल गाजी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो डिड वेल। और पाकिस्तानी टीम्स में फर्स्ट 40 प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया में से, और उसमें पाकिस्तानी टीम ने बहुत ज़्यादा वो विन किया इस प्रोजेक्ट को, और इसमें बहुत ज़्यादा काम किया। क्लाइमेट मॉडल्स वर्किंग कैसे करते हैं, ग्रिड बेस्ड होते हैं, और ये कोई रिमोट सेंसिंग वाला सर बंदा ही स्लाइड्स बता दोबारा से नहीं चेंज हो रही। अच्छा, अब हो गई है। उनको आई थिंक वो साइड से चेंज होती है। अब हो गई है। ओके, अब इसको ना, अब ठीक हो गया, अब ठीक है, अब मुझे हाँ भी जी, नजर आ रहा है, हाँ ठीक जी, हो गया। ठीक ठीक। फिजिकल प्रोसेसेस इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, और एयर सर्कुलेशन, और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ओशन सर्कुलेशन, एनर्जी बैलेंस, और कार्बन साइकिल। और फिर हमारे पास आउटपुट क्या आता है। इनपुट डेटा सेट हिस्टोरिक क्लाइमेट डेटा देते हैं। किसी भी हमने फैसलाबाद का मैं अभी आज ही किया है, मेरे स्टूडेंट हैं आसन, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और पाइथन लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो, और वो ये काम है करने वाले, ये जिस पे बाकी सारे सॉरी टू से एग्रोनॉमी में मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं पिछले 150 साल से। ये जो जिस पे काम हो रहा है एग्रोनॉमी में एमएससी पीएचडी, वो सारा काम 1900 का ख़त्म हो चुका है। yield and yield component, just to measure height of the plant and count number of seeds and plants, and then just what is your product at the end, उसका वजन कर लिया, और इस पे एमएससी पीएचडी हो रही हैं। वीडियोपोलॉजी ये इसका इट स्टैंड्स नोवेयर। अच्छा जी, ये जीएचजी हिस्टोरिक डेटा, हाँ आपके पास पहला होगा 35-40 साल का, तो उस पे आप प्रोजेक्शन कर सकते हो कि फ्यूचर आपका क्या होगा। और टेम्परेचर प्रोजेक्शन आउटपुट आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एलिवेशन हमें बताएगा, फैसलाबाद का प्रेसिपिटेशन पैटर्न बताएगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बताएगा। ये हम क्लाइमेट मॉडल यूज करते हैं, एनर्जी बैलेंस और रेडिएटिव कन्वेक्टिव मॉडल्स, आरसीएम्स, ग्लोबल जीसीएम्स, ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल, या ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल, आजकल इनको ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल्स कहते हैं। अर्थ सिस्टम मॉडल, ईएसएम, और इन पे फिर कभी बात होगी, इस पे फुल फ्लैज एक लेक्चर हो सकता है। रीजनल क्लाइमेट मॉडल, आरसीएम्स। और अब जो CMIP A1 A2 के बाद जो आए वो RCP थे, रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवेज 2.6 4.5। अगर फ्यूचर में रेडिएटिव फोर्सेस 2.6 मेगाजूल पर स्क्वायर मीटर पर डे बढ़े तो फिर कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर रेडिएटिव फोर्सेस RCPs 4.5 रेट पे बढ़े तो फिर कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 6 और 8.5 हार्श है कि और जो 2.5 है वो माइल्ड सिनेरियोज है। हम दोनों देखते हैं। अब CMIP 6 जो है वो लेटेस्ट आ गया है 2019-20 के बाद, तो उसको बोलते हैं शेयर्ड सोशियो इकोनॉमिक पाथवेज, SSPs। इसके अंदर क्या आता है, CMIP 6, पहले क्या था CMIP 5 कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट। फिर ये हम इसमें लाइव रहे अमेरिकन के साथ, नासा वाले भी थे, और सबसे पहले पाकिस्तानी टीम ने इसको 2014 में लर्न किया था। सबसे पहले हसन बुहारी थे, अभी भी है उधर, और उनको मैं लेके गया था, कैम्ब्रिज से MSc किया उन्होंने, उनको पहली दफ़ा मैं लेके गया था। मैं इस प्रोजेक्ट को जब लिखा तो हमने साथ उन्होंने कहा जी क्लाइमेट वाले भी डालें। क्लाइमेट वालों को DG पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कॉल की 2014 में, तो उन्होंने कहा हम तो सिर्फ रेनफॉल का और टेम्परेचर का डेटा लेते हैं कि जहाज नीचे उतर सकता है कि नहीं, एरोप्लेन, ठीक है जी, और बारिश कितनी हुई है, हम तो ये काम करते ही नहीं है। मैंने कहा जी आप करें। फिर उनको साथ मिलाया, फिर उनको बाहर लेके गए, फिर अल्लाह का शुक्र है चलें, बहरहाल उन्होंने लर्न कर लिया। अब वो प्रेडिक्शन बता देते हैं
कभी कभी ठीक हो जाती है, कभी कभी उत्ते थले भी हो जाती है। ओके, ये जी SSP जो है, अब वो उन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस को भी शामिल कर लिया है, जो असल कल्प्रिट थे। पहले सादा टेम्परेचर का ही कहते थे, A1 A2 सिनेरियो, और RCPs में थोड़ा सा ग्रीन हाउस डाला, लेकिन अब इसमें फुल्ली उन्होंने डाला। फिर देखते हैं कि क्या आपका टेम्परेचर होगा फैसलाबाद का। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आज हमने ये 1900 से लेके ये सारा अब हम कर चुके हैं। 2007 से 2014 तक 0.64 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, और 20 से लेके 24 अब 0.9। देखिए अब कितना राइज कर रहा है। जो कह रहे हैं, मैं अभी MP1 की पोस्ट थी, को 14-15 लाख की, तो क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर बैठे थे। अगर सुन रहे हो मेरी बात तो बड़ी खुशी की बात होगी, लेकिन उनके पास तो टाइम नहीं है। राणा साहब थे, बड़े राणा साहब, और उन्होंने 4 इधर बैठे थे, 4 इधर, और उन्होंने मुझे पूछा। मैंने जब बताया तो उन्होंने कहा, ये डॉक्टर आफ्ताब, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरे पाकिस्तान में आप अकेले बंदे होंगे जिनको ये चीज़ें आती हैं। तो मैंने कहा, सर रादर यू शुड से अक्रॉस द ग्लोब द 100 टॉप पर्सन अमंग फ्रॉम 8 बिलियन पॉपुलेशन मे बी नोइंग दिस साइंस। दुनिया के 100 जो बड़े बंदे हैं, शायद उनमें हमारा भी एक नाम हो। उन्होंने कहा, मैं तो खुद कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने साथ कहा, हमने आपको रखना नहीं है, क्योंकि आप मसले हल करेंगे, हमने मसले हल नहीं करने पाकिस्तान के, ठीक है ना। तो उन्होंने वो पोस्ट कोई और रख लीजिए, आप पता ही होगा किसको रखा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। मुल्क ऐसे नहीं बर्बाद होते, ये बड़ी प्लानिंग से होते हैं। मैं अभी आपको शेयर भी करूंगा इसके बाद एक चीज। ओके जी, वार्मेस्ट ईयर आगे, ये सारा वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने ये काम किया, मॉडल की प्रिडिक्शन की, ये लॉसेस हुए मेजर क्रॉप में। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो वीट, राइस, कॉटन, मेज की पैदावार कितनी कम होगी, 2 डिग्री। अभी मैंने शेयर किया था लेक्चर शुरू होने से पहले, जिम्मेदार जिन्होंने फेब में लगाई है जनवरी के एंड पे, उनकी मकई जो है वो दाने खाली रह गए, छली बनी नहीं, दाने नहीं बने उसके ऊपर, ठीक, जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमने काम किया। CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज की 390 से 550 तक, तो थोड़ा सा बेनिफिट लिया क्रॉप ने, टेम्परेचर को कंपेंसेट किया, 3 से 60% पैदावार बढ़ी, ठीक है। और ये 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए तो 1.2 मिलियन वीट का लॉस होता है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से। ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन वीट। तो हमारा चूंकि 67% एरिड एरिया है, 24 जो है वो सेमी एरिड है, और सब ह्यूमिड 3% है, और 1% ह्यूमिड है। तो आपकी सारी जो क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी एरिड और सेमी एरिड में है। एरिड होरिजोनली डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ नेचुरल रेनफॉल, और दूसरी जो है वो आपकी ओके तो ये जो है ना, दिस इज अलार्मिंग कि आपका एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, अगर नजर आ रहा है, तो नंबर ऑफ डेज विल बी curtailed, growing season length will be shortened। लामाला आपने कोई मॉइस्चर, कोई लिक्विड रखा है चूल्हे के ऊपर, इफ यू डोंट टर्न ऑन योर स्टोव वो पड़ा रहेगा। अगर आप वो पायलट उसका छोटा सा जला देते हैं, वो 2-3 घंटों में बॉयल होगा। जो ही आप उसको इंक्रीज करते लगते हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ते से कम टाइम में वो बॉयल हो जाता है। तो इसी तरह क्रॉप के अंदर भी टेम्परेचर का मेन इम्पैक्ट यही है कि इसको हम निकालते हैं थर्मल टाइम से, और फिर क्रॉप की वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान और रिप्रोडक्टिव के दौरान जब सिट्टा निकल आया तो फिर हम फोटोथर्मल टाइम निकालते हैं। तो ये राइस की सिचुएशन क्या होगी, उसकी पैदावार भी अफेक्ट होगा। वैसे तो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होगी, लेकिन थोड़ी सी CO2 की कैपेसिटी बढ़ाने से क्रॉप बेनिफिट मिलेगी। मेज का भी ये हमने मालूम किया, कॉटन का भी। अच्छा जी, ये आज हमने किया ये काम।
नजर आ रहा है? Yes, yes. इसको देखिए जी, ओहो, रेनफॉल का पैटर्न देखें जी। ये बेसलाइन है, ये जो पहली है जिस पे मैं कर्सर फेर रहा हूँ, तो बेसलाइन के साथ अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा फ्यूचर जो है, ये पहली जो है 2000 अर्ली सेंचुरी है। लेफ्ट साइड पे पहली जो 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 7-8 बगैर कलर की है 1.17 वाली फिगर, वो बेसलाइन के साथ है। 1980 से 2010 तक के डेटा रन किया, और ये पहली जो है वो लाइट ग्रीन जो है 1.65 वाली और 1.35 वाली। 1.65 वाली 4.5 के साथ है। अगर रेडिएटिव फोर्सेस 4.5 मेगाजोल पर स्क्वायर मीटर पर डे के लिहाज से बढ़े तो फिर क्या होगा फ्यूचर में, और 8.5 से बढ़े तो फिर आपकी रेनफॉल जो है वो स्लाइटली डिक्रीज होगी। और इसके मिड सेंचुरी सेंटर वाली है ग्रीन लाइनें, और एंड सेंचुरी में आपकी रेनफॉल कम हो रही है। भाई ये लो, ये आपका अच्छा जी, ये हमारे MRI PSM मॉडल यूज किया CMIP6 के तहत SSPs को यूज करते हुए। तो आसन ने डेटा डाउन स्केल किया, सारा फ्यूचर में बताया, और ये फ्यूचर आपका इफ बिजनेस रिमेन्स एज यूजुअल, अगर सब चीजें ऐसी ही रहें तो फिर ये सिचुएशन होगी, लेकिन चीजें ऐसी नहीं रहेंगी। 85 लाख एक साल में बंदा पाकिस्तान में खोते पैदा हो रहे हैं, 85 लाख। वो एक बच्ची बैठी थी क्लास में, वो कहती सर आपको ये फिगर कहाँ से मिली, तो दूसरी उसको मार के कहती है पागल सर हमें कह रहे हैं। सोलर रेडिएशन जो है वो फ्यूचर में थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। पहली जो लाइन है लेफ्ट साइड पे 21.51 वाली, वो बेस लाइन के साथ रन की है। और आपको पता है इसकी रीजन कोई बताएगा, कोई बच्चा? आपका एक चौथा मौसम आ गया, 2 खत्म हो गए, एक और आ गया 5वां, स्मॉग। वो जो 35-40 दिन आती है आपकी, Mainly in Lahore and industrial cities. यस, इस वजह से ये पूरे साल का है, तो सोलर रेडिएशन आपकी कम हो रही है। 2017 में इन्होंने कहा जी हमारी ना बड़ा अच्छा मौसम रहा, और हमारी पैदावार तकरीबन एग्रीकल्चर के सियाने बताने लग पड़े कि ये हो जाएगी और एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, और हो गई, और तकरीबन कुछ 40 मिलियन टन आएगी, वो आई 18 मिलियन टन। गवर्नमेंट ने हमारे जूते, और उन्होंने कहा बताएं क्या रीजन है। हमारी यूनिवर्सिटी में आगे जनाब 200-250 सियाने, मैंने सवाल कर लिया, उन्होंने जितने भी सियाने थे उनको उन्होंने कहा जी कि ये तो हमें नहीं पता, आप खुद बताएं। आई केम बैक इन माई लैब, 10 बच्चे लिए, उनको मैंने पिछले 10 साल का डेटा निकाल के दिया फैसलाबाद का। आप हैरान होंगे कि दाना भरने के दौरान 6 से 8 घंटे की लाइट चाहिए थी, तो उस साल 2017 में 1.5 घंटे की लाइट पड़ी टोटल। इसका मतलब लाइट भी एक मेजर रोल। मैंने जाके 4 बजे उनको बताया कि ये रीजन थी, तो उन्होंने कहा ये हम जिम्मेदार हैं, आप साइंसदान हैं। जिम्मेदार और साइंसदान में ये फर्क है कि जिम्मेदार वो जिम्मेदारा ही बेचारा करता है, पानी भी लगा लेता है, खादे भी दे देता है, लेकिन साइंसदान इसको सही बताता है कि Sir, साइंटिफिक। जी excuse me, sorry, I'm cutting you. There is a student, like there are some international students as well, and they are requesting to do it in English. ओके, तो मैं तो ये okay ji, so this is the chart showing the solar radiation. The first bar showing the is supposed to be meant for baseline, run with the baseline, means 1980 to 2010 observed data of Faisalabad, and first 2 bars from left side 20.65 you may find figure.
So this is run with the for early century 2010 to 2039, and with the RCP 4.5, and the dark blue line graph showing a 20.87 figure for early century, running with the uh, with 8.5 RCP 8.5, or SSPs. Rather, SSP are quite good than RCPs. RCPs has been replaced with the SSPs. अभी तो दुनिया हम तो even A2 scenario के साथ भी आए. So as the three bars are showing that solar radiation are decreasing in Faisalabad with respect to time. Next is the this is the difference. Again, the change in solar radiation. Definitely the graph is showing for end century there may be increase with the baseline 0.04 with the RCP 4.5, but not again someone change in the RC with the for end century with the RCP 8.5. Okay, so maximum and minimum temperature. Maximum and minimum temperature for Faisalabad, if first line 31.7 is the model has run with the MRI model with the baseline data for Faisalabad district, and for early century 31.9, 32.4, and then increasing trend you may see in the early, mid, and late century scenarios. Maximum temperature will be increasing almost 5 degrees Celsius. 5 degree, 1 degree centigrade, that increased 1.5 during last century. So lot of changes has been occurred as a result, tsunami and drought and some other pattern you really witnessed, especially in Pakistan. Again, the T maximum, there will be increase in with the baseline 0.7 for early century, so 0.31 with the baseline temperature. There will be increase in mean temperature during mid century, and 4.9 one running with the these model with the CMIPs, IPs, SSPs 8.5. So 4.9 degree temperature will increase over baseline by the end of this century in Hyderabad. Again, minimum temperature increasing trend 18 to 23, 19, 20, 21, 22, 5 degree. So this is alarming. Maximum is also creating disturbance, but the minimum temperature, that is very much lethal, especially at night. So this is called night temperature. Minimum temperature is called night, and maximum temperature is called day temperature. So what will happen with the crop when night temperature will increase? During daytime, more temperature, respiration, stomata close, plant will close stomata, and as a result of that, so there will be no photosynthetic activity within the plant body, no carbohydrate will be assimilated, and photorespiration will start in high temperature, in high light intensity during daytime, and at night time when temperature, minimum temperature will rise, again crop sit idle whole night when don't find solar radiation, but due to high temperature, plant will also utilize for its own survival its carbohydrate at night time even. So respiration, photorespiration will be more, and respiration will also be more in daytime during high temperature, during high light intensity,
but at night temperature, when crop in last century, there was no increase in respiration rate throughout night, but right now in future, there will be high utilization of carbohydrate even for its own survival of the plant when night temperature will be increasing. So what we do, we actually use crop models for estimation. So one model, the statistics course system for agro-technology transfer, has been developed by the Americans. My professor, Dr. Gertrude Gunboom, in University of Florida, is the pioneer in assembling all the models from all over the world, across the globe, and gathered under one umbrella and given name in 1998, the DSSAT. And another model was developed by Australians, that is called EPSOM, Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project. So we use that for 4 cultivars. First one is Akbar, then second one is Rouge, and 2 new cultivars. Uh, and we calibrated model under our Faisalabad conditions, and we got these coefficients. कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? Somebody can tell me, please, if international participants are, can anybody tell me what these values show? Anyone? Can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah, my question is, what P1V, P1D, P5, G1, G2, G3. So these are different stages of the crop plant. P1V early stages, then P1D the later stages, and P5, that is almost when plant is at its peak, means everything is good with the crop plant. Then G1, G2 showing the grain yield of the crop plant, G3 showing the dry matter, and FINT, the phylocron, means the arrangement of emergence of new leaves on the main stem, which are in turn becomes the food synthesizing factory for the crop plant. So this value showing 60, 61, 70, 65, the FINT value, the successive emergence of leaf tip on the main stem. Model worked well, DSAT, and these are some values for 20th November, 30th November, 10th December, and some other showing data temporal variation we also took into consideration. These data set were taken by the RE people. What happened? Okay. Okay. These are the coefficients for the first cultivar. These are second, then third, then fifth. One graph is excellent between the observed and simulated for days taken to NCs, mean flowering, with low RMSC and high D value. चल रही ना आगे? Then we use the model for climate change impact assessment in case of wheat under Faisalabad condition. The people claim that director, the RE people or breeder claim that we have evolved the cultivars which will work in future against or withstand against high temperature. But here is the situation. The first line is run the model with the historical data, and secondly the future
20, 35 to 50. So there is decrease of wheat yield by 7.7% between this period 2025 to 2050. So they must evolve some of the cultivars. Washington has done a lot in Washington State University Pullman. So they have evolved cultivar which even withstand against a very high temperature, 40 degrees Celsius, during grain filling stage. But in Pakistan, when mean temperature increases from 21 to 22 degrees Celsius, there is decrease in grain weight from 2.64 to 2.88 milligram per grain weight, and there is decrease of duration from 2 to 2.5 days. So grain filling period in wheat in Pakistan takes almost 33 to 36 days to be filled in. So when temperature will increase, so there will be decrease in number of days to be filled in by the grains of the wheat. Once during flowering stage, the 4 weeks before flowering are end-season. Very much important. Plant manufactures many food and keep it on top of the stem. Then these are translocated to the green part. These models we use run with the first line showing the baseline, and here is the temperature increase on x-axis, and on y-axis the increase or decrease in the seasonal rainfall pattern. So 5 best GCM we used. So all models says that temperature is increasing with respect to baseline, and there may be some outliers, M, N, P may be outliers, but we use best model. So these 5 best model are number of days from 1980 to 2010, the total number of hot days, then total number of wet days, total number of dry days, then total number of wet days we take. So some models they consider the number of dry days, then wet days, then cool wet, then hot wet, then like that. This is showing that there will be increase in data in 2020, 1.3 degrees Celsius minimum and 1.5 maximum. So 2050 2.5 for Faisalabad, and 2.8, and then 2080 3.9 to 4.4 degrees Celsius. So there will be increase in uh, temperature as the general circulation models are showing for Faisalabad. Uh, these are actually by data set. We use these models, understanding of plant, soil, weather, and management, and then estimate growth, development, and yield of the crop. So input data set we give means weather data, then soil data, then your management, crop management we also take into consideration. So these are model parameterization we take into consideration. Some of the values RMSC when model is working well, or line is fit, when there will be close agreement between the observed value for grain yield, for total dry matter, for leaf area index, for days taken to NCs, for days taken to maturity, between the observed value and the model value. So we decide on these bases. So there are some other parameters also. Is model working well or not? So model works well. D is very close to 1, and RMS is quite low. And this is the time course increase in the continuous line showing the model value, and the dotted line showing the observed data. Again, we take into consideration the 2040 to 2070 scenario RCPs, and with the increase in CO2 level, the crop will get benefit, but it will be static almost between 630 to 720 ppm. When CO2 will rise in future,
so there will be no increase in yields. Again, with high fertilizer will actually compensate some of the yields in case of this crop. And a rainfall pattern, although this crop was planted uh, in irrigated region, so almost little difference is seen in if you increase rainfall from 25 to 200%, means during this period of the crop growth phase, or from sowing to harvesting, so there will be increase in little bit increase in the rain yield at the end. Yes, very much impact you can see as far as the uh, temperature is concerned. So from there will be huge decrease in uh, yield, almost 5-6 times when temperature is increasing. So, but you can compensate this temperature increase with a high dose of fertilizer. So these are current adaptation package, means application of nitrogenous fertilizer, then early sowing, then nitrogen use efficiency may be increased by 10%. Some reps were developed, Glaxio scientists, they sat together, they joined their heads, and then they gave some suggestions. Just increase soil organic matter by 1% and groundwater decrease 10%, and increase plant population and heat tolerant cultivar we also took into consideration. So this reps were developed, and that's you see that this is a green line running model with the baseline, and all model are depicting that there will be decrease in yield in future. It should be higher. In other countries, it is higher than that, almost double than that. This with the baseline. But once you run with the current adaptation and reps, so there will be slightly increase that it will compensate surely to some extent with the baseline data. So again, many results we are having. Question. Next time we will hold another webinar, so that will show the crop resilience and smart agricultural practices, or some other, what will be the impact of early sowing or late sowing or mid sowing, or some other parameter, whatever you wish at the end. So we will change that pattern, and we will get the output in terms of yields. We decide, please, uh, organizer of this webinar, they are requested to please organize or give new date for working with the climate resilience, or some other methodology or parameters which will increase the yield or compensate the yield that loss has been seen by the rising temperature or low rainfall. So this will surely compensate or offset the yield within the farmer resources. Please decide, let me know also. Question? Question, please. Thank you so much, sir. It was really informative session. Mainly, it is way more interesting for me because I'm also going to work on modeling somehow. And my goal is to use the data provided by FAO and other research institutes, and to process the data and draw solutions for sustainable agriculture based on specific areas. Okay. So I hope I will also be learning modeling. Sure. Any other question we will take up? Yes, sir.
There is one question: how to understand climate change? How to understand climate change? You can feel around. Climate is changing, surely. You have three parameters. I in very much first or second slide I showed that the three parameters are number one, elevated CO2, yes, yes. So there are three: temperature increase from mean. Once temperature has been increased, there may be little bit change in the or variation in the year to year difference in temperature or rainfall. Some year uh, more temperature, some year less. But once the permanent change has been occurred with respect to mean temperature, so there will be no reverse from mean. So then you can say that this is climate change. Other one is climate variability. You know that 1 year hot, 1 year cold, 1 year mild. It may be high temperature. 1 year flood may occur. It may be drought may prevail. So secondly, the erratic rainfall. These are also three. Number three is the rainfall change in rainfall. Some year more rainfall are received, some year less rainfall. Faisalabad is again only 200 to 300 millimeter water every year we receive uh, through rainfall, very much low. Next question. Sir, next question is how we can learn about climate models. As you said that there are models Okay, given. models are actually set of equations. What we do, during my PhD studies, on daily basis, I brought data from field on different parameters on crop phenology, on crop dry matter, and leaf area index. So three or four parameters you have to bring daily from certain area from your field, and then you have to draw relationship with the different climatic parameters like temperature, like solar radiation, like rainfall. So then, if you get equation y is equal to a plus bx, a plus bx, a means any variable or line which cut the from y-axis, and bx mean b mean the slope which you draw relationship of do you understand the coefficient of determination or r square value? So slope is we Yeah, obtain the slope ones, the equations that if we use to r derive square values. value is close to 1, means above 0.967 or 8, close to 1. So we take that equation. We get first model was developed in for sorghum crop in 1980, simply on the basis of amount of solar radiation received in a day. Means y is equal to a plus bx. uh, so value was given, b was given 3.08. So intercepted solar radiation multiplied uh, with the b value, and you get simply get the how much increase in dry matter on daily basis mean per square meter per day, mean 20 grams or 30 grams or 100 grams or 150 grams. Y is equal to
3.08 into x. X is amount of solar radiation. Once multiplied with the 3.08, so you can get the sorghum or dry matter harvested by the crop plant on daily basis, because there is daily variation in solar radiation. Any other? There is a question: what are the authentic databases for modeling? Okay, very much important. At least we have 4 or 5 minimum data set. 6 to 8 data you require from your field on crop management, means in the form of phenology. Daily you have to make visit, you have to make chart at what stage crop is right now. So secondly, you have to bring sample from certain area per square meter, how much leaf area, uh, and then secondly its total dry matter. So at least 6 to 8 harvest you need to bring throughout your growing season of the crop, means wheat 6 to 8 harvest we must bring. Internationally it is a bring sample after every 7 days if you want to develop new model, a new equation. But already developed equation you want to run, so then at least with fortnightly you have to bring data on crop management, then on dry matter, leaf area index, secondly on your soil parameters, at least from top to 200 centimeter, and thirdly on at least 5 to 6 parameters minimum data, minimum temperature of that particular area in which you have planted crop, maximum temperature, amount of rainfall received, the atmospheric humidity, the wind pressure, and VPD, vapor pressure deficit, and lastly amount of solar radiation. So these 3 parameters, at least crop data and soil data, and then thirdly the management data you need to develop any model. Is there any other question? Um, there is one question: why does temperature drop so much from day to night? Day to night, surely it's a shift of the sun or shift of the when sun is earth is facing towards sun, means for 12 hours it should be in front of the sun, and then the back one you call this this is a dark side, or there may be some countries across the globe which are having a, this behavior. Actually the globe or earth is actually rotating at its axis 23.5, almost 23 point yeah, almost 23 at its axis, it's revolving. So at very high speed, means I 1500 kilometer per hour, I think this figure is 1500 kilometer per hour. So earth is revolving around its sun, around its axis, around uh, sun also. So there may be 365 days it will complete one cycle, and sure when it's daytime, so temperature will be high, and at night time when it's away from sun, so it may be the minimum temperature. Then there is one question: what are the solutions on climate change? Solutions, nothing. No one can. Oh, you have to reverse back all these drivers. All we can Population do to control, just cope up with. population control, afforestation, then shutting down all uh, the factories or mills or farms which are releasing greenhouse gases at very much high rate. For example, Pakistan is only contributing less than 1%, only 0.6 or 7% of greenhouse gases annually. But you know, it's most vulnerable, means number one among from all countries, because if Canada is
producing greenhouse gases. America is producing, although very much away from Pakistan, but within 48 hours, it will get settled, the greenhouse gases, with an ozone layer. So this will increase the temperature of Pakistan because Pakistan is at a very lower latitude. There is one question that is there any institute working on horticultural crops modeling? Sorry, I couldn't hear Um, you. the question is there Hmm? any institute or someone working on horticultural crops modeling? Lot. Horticulture crop modeling in University of Nebraska, one of the renowned professor. She was the head of uh, the horticulture department, and I have had chance to meet her in one meeting in the Columbia University, New York, and I brought her card and made request to the horticultural people. They only work with the jamun and bear, you know, very poor condition. One day I visited the square number 9, which is near to the IBMS department. So there were a lot of trees were there of citrus trees, but only out of 100 trees, only 3 trees were having 3 small and rotten citrus. This was last year in Feb, but outside my house and along the roadside, very beautiful canoe and citrus was there, and very delicious one. But in Jamia Desia, Ghasia Pusia, please, I don't want to say JDGP. No single work has been done so far. Even they don't know how to work with the tetraploidy 3N. Is there any other Horticulture, question? they have responsibility to work with the 3N, means to introduce tetraploidy. Seed must be evolved. You know that we all the time get at very high price, almost bitter gourd seed, one seed per 1,000 rupees, Pakistani rupees, we spend just on the import of uh, bitter gourd seed at very high rate from Holland. But this is the responsibility of the horticulturist to work with this. They are doing nothing. They sit idle all the time. But professor, doctor, flom, 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 flom. Okay, next. There's question, how can awareness about the crop calendar be effectively delivered to smallholder farmers, especially in areas with low education? Okay, this should be very much strong linkage between academia, between troika, you can say, the all over the world, academia, then the researcher, and then extension. Very good triangle. So our extension people, they don't know anything. They don't do anything. Still, you can find some of the slogans, "Tab ke baat raj ke kha." As you cultivate your soil 20 times, so there will be more grains per unit area. Absolutely nonsense, stupidity. I visited one of the farm in USA, so that was not cultivated for the last 60 years, even uh, the- not cultivated for 60 years. Even yield was increased with respect to time. No decrease in yield was seen. The crop, the field was not even cultivated for the last 60 years. It's the talk of 2018. Our still the extension people, they say that "Tab ke baad jire kar dane tere kamle vi syane." So they have GPS system. They apply irrigation water. Then with the help of drones, seed is planted. Even row distance and plant to plant distance is also properly maintained. Very high with very high accuracy.
There is one question: on which platform can I learn aqua crop models? Aqua crop model. It was developed in 90s by the FAO. Two or three of my student. It's very easy. You can get the help from YouTube. All has been given very much input basic data set. You need to work with this one model aqua crop. So this will let you know that how much water has been evapotranspired from this field, and you fix some limit. If it is within less than 30 uh, percent or millimeter of total water which you applied, so then you can go for the application of irrigation. So this is actually used for irrigation scheduling. How much to apply, when to apply. Aquacrop model is quite good. Works with the different climatic parameter like atmospheric humidity, minimum temperature, maximum temperature, solar radiation, and some other parameters, wind velocity, wind vane, etc., the vapor pressure deficit, and some of the also crop parameters that take into consideration. You can get help from YouTube even. Echo crop model very easy. It will give you the water evapotranspired from soil surface and plant surface also. One student is asking what are the opportunities for students for doing PhD in modeling outside the country? In Uh, modeling from Pakistan, no, from abroad. from abroad, yes. Which country the person is living or residing? Who is I think they asking? are from Pakistan as per their name. Okay, Pakistan. You must visit. Come to me, please, or talk to the big crop modelers in USA. Number of people are there, very much competent. Yeah, if I add from my experience, crop modeling is very common in Europe as well. And Mhm, there are so many research institutes. For example, I was talking to this one researcher in Germany, and she was mhm, saying that they draw models that can help out both green and blue bioeconomy, which means mhm, they wanted to work for aquaculture and this agronomy on the same time. And they were mhm. considering climatic conditions in specific areas for both of these fields and models. So I think there are a lot of opportunities. And with your permission, sir, I would like to add that I am also making videos on where I guide students Mhm. on how did I prepare for my IELTS test without any academy, or how Oh, did I write my letters, and how did I apply for the what scholarship on about my. your score? My score was 7.5, and I did not go anywhere. Excellent, excellent, excellent. Big hand for you. Yeah, and I also won like 4 to 5 scholarships, but I did not like have anyone telling me like you do this, you do that. So I just try to make videos on how did I overcome all the challenges in Excellent. uh, in in taking these positions. So if anyone wants, then you can follow me on Instagram. My Yeah. handle, if I show it's, I don't know if it's visible or not. Okay. It's Please. Okay, you OYYHERSHAH. can share in crop calendar group. Yes, I can send in there. Yeah, Oh, yeah, yeah. Thank you, sir. thank you so much. Any other? I think this is it. I don't see any other questions. God bless you, and very much thankful to the organizer, also to my daughter, and all students who gave me chance to uh, deliver my sentiments along with this catastrophe, changing climate. You know that in future very difficulty for yield is decreasing in cereals in Pakistan, even 25% in rice. Rice is also very much rice, maize, sunflower, even wheat is of winter crop. You know that, but again almost 2 to 3 degree temperature has been increased during this period, and especially in the month of March. If you talk about 2022, so there was 5 to 7 degree increase in temperature in
during the grain filling stage in Punjab or Pakistan during the month of March, as far as wheat crop is concerned. So that decreased the yield almost to halved, almost to half. So you have to work with these parameters. You have to. Time is over. Time is over. Thank you so much, sir. It was But just really very and we'll informative session. fix time for another webinar. So then we will work with the Prof resilience, or actually we will use model. Sure. Sure, sir. Thank you so much. God bless you all. Bye bye. Allah Hafiz. Goodbye.